वेलकम टू जस्ट जर्मन थिंग्स। मेरा नाम है नंदनी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कंटेंट बनाती हूँ लाइफ इन जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज, करियर और एजुकेशन इन जर्मनी एंड ऑल्सो ट्रैवल अक्रॉस यूरोप। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं और इनफैक्ट यूरोप में जॉब करना चाहते हैं। बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जर्मनी में और यूरोप में अभी ह्यूज लेबर शॉर्टेज है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जर्मनी प्रमोट कर रही है कि जो बाहर के लोग हैं वो आएँ, और जर्मनी में जो लोग बहुत रह रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आई रिसेंटली अटेंडेड अ करियर ओरिएंटेशन वर्कशॉप. So I actually volunteered for that workshop, and this workshop was organized by CGI and Indian Ladies Club for women who are looking for jobs in Germany. And the best part about this workshop was कि there was a panel discussion, and panel में बहुत ज़्यादा esteemed members थे जो कि for example HR of German companies let's say and AVPs, VPs of different companies जो आए और उन्होंने अपने बहुत सारी knowledge share करी. So I got lot of valuable, lot of insights, and I thought why not share this knowledge with all of you. There's a huge shortage of skilled labor here. A lot of people want to come, but बहुत बार ऐसा होता है कि what are the strategies, what are the things that we have to keep in mind so that we go through the application process and we use the right strategies. So ये छोटी छोटी चीज़ें जब किसी expert से पता चलती हैं तो I'm sure लोगों को बहुत help मिलती है. So this is why I'm making this video for all of you who are interested in working in Germany or in Europe let's say, and I'm going to answer a lot of questions related to the process, application process, related to the resume, what are the things that are important in your resume, what is the recruitment process particularly in Germany, and also how should you be prepared for the interview in Germany. So I will try to answer a lot of questions related to all these topics in this video. So let's go. So the first question arises, how to look for a job in Germany? What is the procedure? What are the methods? So when talking about it, I think first thing that I would like to point out here is that looking for a job in itself is a job because it requires a lot of efforts, a lot of strategies and a lot of knowledge and confidence. से पहले हमें सबको पता है कि जितने भी job portals होते हैं, let's say Indeed, Monster, Stepstone, Kimeta, so ये सारे जो famous job portals हैं जो जर्मनी के हैं, ये सब पे अप्लाई करके ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली सी व्हाट आर द वैकेंसीज एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. But there is something that we often forget, that in this age of social media, one thing which is becoming a powerful tool right now is LinkedIn. So I will try to explain that with the help of an example. For example, you see a vacancy, a job listing on LinkedIn. You apply through LinkedIn, and then maybe the recruiter gets your application. Most of the times, or most probably, the next step a recruiter will do is will look at your profile and then will check your LinkedIn profile because you applied through LinkedIn. And if your LinkedIn profile is not updated, or let's say it's not that strong, the recruiter might get a feeling that you are not doing enough, or maybe whatever you have on your resume is not true. So that is the reason whenever you are updating your LinkedIn profile, it's important that you add what are your experiences and then you give value to all of these things. So getting a job right now is possible, or you have more chances if you have a strong LinkedIn profile. Now what do I mean by strong LinkedIn profile? Does that mean that I need to have an updated profile? Is that all? But that's not all. So in this panel discussion, a lot of people, a lot of experts, they pointed out, or they actually focused on the fact that if you have an updated LinkedIn profile, that is not enough. So other than updating your LinkedIn profile, this next topic or the next point which is really important here is your visibility on LinkedIn. आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है लेकिन अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है लिंक्डइन पे तो मे बी रिक्रूटर्स आपके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव द विजिबिलिटी, लाइक यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ, यू आर पोस्टिंग समथिंग, या उन अपने नेटवर्क में आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं या उनके कॉन्टेंट पे आप एंगेज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी के पोस्ट पे आप कॉमेंट कर रहे हैं या आप उनके पोस्ट पे अपने पोस्ट कुछ डाल रहे हैं, तो उससे आपकी विजिबिलिटी बनती है क्योंकि आप अपने नेटवर्क में दिखते हैं. तो रिक्रूटर्स के पास इतने सारे लोग हैं, सो हाउ शुड दे बी कन्विंस दैट यू आर द राइट पर्सन? सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन. हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वेरी related or relevant for Germany especially. German में एक word होता है विटामिन बे. So this B stands for Beziehungen, which means relationships. So Germany में vitamin B is very important. But what does that mean?
that actually means having relationships, having contacts and networking with the right type of people. So it gives a lot of value to vitamin B. अगर आपके right type of contacts हैं तो अगर आपको कोई refer कर सकता है तो of course there are high chances कि आपकी जो profile है वो ज़्यादा जल्दी आगे पहुँचेगी. So how do you network with the right type of people? अगर आप उनको directly message करेंगे, approach करेंगे या you are looking for job, they are getting these messages every day, so they might not show interest. तो आप उन लोगों से जो आपको लगता है कि नेटवर्किंग करके फ़ायदा होगा, उनसे राइट तरीके से नेटवर्किंग करें दैट यू एक्चुअली एंगेज विद देयर कंटेंट एंड यू ऑल्सो पोस्ट समथिंग विच यू थिंक इज़ वैल्यूएबल फॉर द कम्युनिटी एंड यू माइट गेट विजिबिलिटी एंड देन अदर पीपल नोटिस दैट you are a person who is doing well in your area. So the next step is application. So once you think you have already found the right type of job, so what is the next step is the application. So how should you actually apply? What are the documents which are important? So हम सबको पता है, we all know the importance of resume, and these days everybody talks about ATS friendly resume. But what does that exactly mean? How can a resume be ATS friendly? So in a very simple term, I would try to explain that. So whenever you submit an application in a system, it goes through a tool which can be called as ATS in this case, and it does the screening of your resume. So there are high chances कि आपके resume में कुछ ऐसा है जो उस screening से pass ही नहीं हुआ. But why? So there comes the role of keywords in your resume. So for example, if I'm applying for a particular kind of job, for let's say I am a data scientist, and I know in my field what are the qualifications, what are the skills that are required, and if those skills or those qualifications are missing from my resume, then ATS would obviously reject the resume, because for that tool this is not the right resume or not the right application. So that is why it is very important that whenever you apply to particular kind of job, it's important you cater your resume to the type of job you are applying. So one resume for all kind of jobs would not be actually a good idea. And also when you are applying to jobs, make sure that you know little bit about your area. For example, आप financial sector में अगर apply कर रहे हैं और अगर आप एक बार उसका word German में ढूंढे जैसे Finanzdienstleistungen, तो अगर आप वो Google पे type करें तो मे बी आपको ज़्यादा results show करे और आप उस हिसाब से ज़्यादा jobs पे apply कर सकें. तो इस तरीके से अगर आप उसका German word जानते हैं तो it would be better. So talking about resume, I want to ask you one interesting question. Panel discussion में ये question आया और हम सब बहुत shocked थे इसका आंसर जान के. So one of the experts asked, what do you think, how much time does a recruiter actually spend, like average time spent on reading a resume? So what do you think, how much time does a recruiter spend on one particular CV or application? I thought at least 2 minutes, but that's not the reality. So the average time spent on one application or resume is just 30 seconds, which means you just have 30 seconds to convince the recruiter, or if they should read your resume till the end, or they should actually move on to the next resume. So you means you have just 30 seconds to convince the recruiter to read your resume till the end. How would you do that? So here comes the size of the resume. If your resume is 2-3 pages long, I'm sure the other person will not have the patience to read it, which means if you are talking about your experiences, your skills, that should be on the first page. Even if your resume is 2-page long, the most important parts, for example, your job experiences that are relevant to this type of job should be on the very first page. The skills which are relevant to this type of job should be on the first page, so that they get motivated and also read till the end. So this is one thing I think we often forget, but whenever we are applying to a particular type of job, make sure you also change the sequence a little bit, and you need not talk about all the job experiences. They are not interested in knowing what all you have done in life. They want to know if you have done enough to be able to do their job or the kind of job you have applied to. So there was one more interesting question during the panel discussion, which I thought I should share with you. A person asked, should I have my picture on the CV or not, on my resume? Does that matter? You must have seen that in this European format of CV or resume, a lot of people prefer having a picture at the top. But is it important? So according to the new German law, it is not a must. You can obviously, because of the privacy, you can submit a CV without the picture.
But having said that, the expert also emphasized on the fact that a lot of companies in Germany still, like the mid-scale industries or let's say small companies, they still prefer having a CV, a resume with a picture. It was an interesting question during the panel discussion. Somebody asked about hobbies. Should we talk about our hobbies? Should we include that we have particular hobbies or not? So they said, what if you're just writing, like you like to read books, or let's say you like to go for a walk. So for a person, especially for a German person, this would be an incomplete description of your hobby. Try to be more particular and tell them more about you. For example, if you say that you like to read books, for example, Bücher lesen, then the next thing is what type of books do you read? So if you're talking about hobbies, it's important that you show something about yourself, what your interests are, not just picking up from everywhere, like I like reading, I like traveling. So this is not the right way to talk about your hobbies. Okay, one more thing that I would always suggest when you're applying for a job here is to add or to include a cover letter. Like I know a lot of people try to apply only through resume, but in Germany, or I would say in many other European countries, a cover letter is given equally importance. So अगर आप वो जिसको जर्मन में अनश्राइबन बोलते हैं, अगर आप वो A4 पेज लॉन्ग अगर लिख रहे हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स, आपके स्किल्स उस पर फोकस कर रहे हैं, you're not talking about irrelevant stuff, not making a story, just talking about facts and what are your skills and experiences, that would also make a big difference. So talking about cover letter, I would also like to add something from my personal experience. So last year when I was trying to switch my job, I applied to different types of jobs, and every time what I think was the most important document for me was cover letter, Anschreiben. Because whenever I was applying to a different type of job, I was going through the job profile, what are the things they are looking for, and do I have these things? Then I need to focus on the points that I do have these things, because I'm going to talk about all these things in the interview. But what if I don't get a chance to go through the interview? So this is my chance to prove that yes, I know about your company, I'm interested in working with you, I am motivated, and then I focus on the with the help of points, like why am I motivated to work with this particular company, through my experiences, through my skills. And when you're talking about it, you cannot just pick up the random lines from internet and use in your cover letter. They have to be really personal. It should look like that they are not reading something from what they are reading every single day. It should talk about you as a personality and your way to convince somebody that yes, you are the right fit for the job. Because whenever they are reading your Anschreiben, your resume, there comes a question in the mind of recruiter: warum ausgerechnet du? Why you of all people? So that is your chance to tell them that's the reason why I am here of all the people. कवर लेटर एंड रेज्यूमे, उसके अलावा ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सो जर्मनी में, और आई वुड से इन मैनी अदर कंट्रीज़, रेफरल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी का कॉन्टैक्ट लिखा है और अगर आप उनको ऑलरेडी से पहले से बता दें कि आपने लिखा है, तो देयर आर चांसेस कि वो जो रिक्रूटर है वो आप उसको रीच आउट करेंगे और मे बी दे विल आस्क द पर्सन अबाउट यू. सो मेक श्योर अगर आपने किसी का रेफरेंस डाला है तो उनको ऑलरेडी पता है कि येस यू हैव पुट देयर नेम इन द CV. And if you have worked in 2-3 companies, it is always better to have testimonial from your previous employer, because Germany as a country बहुत ज़्यादा focus करती है डिग्रीज पे, क्वालिफिकेशंस पे, पेपर वर्क पे, एंड अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स है तो वो उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी. एंड देयर आर हाई चांसेस कि दे विल गो थ्रू द टेस्टिमोनियल एंड सी what are your roles or what were your roles in that particular company. So ये सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है जर्मनी में. अगर पॉसिबल है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाइए. एंड कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों पे इतना ध्यान देते हैं कि हम बहुत छोटी चीज़ें भूल जाते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू नेम अ डॉक्यूमेंट? अगर आप एक डॉक्यूमेंट नेम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने रेज्यूमे को लिख रही हूँ लेबन्सलाuf, मैंने उसको नाम दिया और मैंने अपनी मास्टर डिग्री को मास्टर लिखा, तो मैं आधा जर्मन में डाल रही हूँ, आधा इंग्लिश में डाल रही हूँ. सो मेक अ पैटर्न. हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस होती है. अगर आप डॉक्यूमेंट्स को नेम भी कर रहे हैं तो उसमें एक पैटर्न यूज़ करिए. एंड द बेस्ट वुड बी टू compile it in one file and then add a zip folder, and then when you are writing the email, tell them that you have included all these documents, and that is the sequence of the documents. And talking about the application process,
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई पर्टिकुलर कंपनीज़ होती हैं, हम उनकी रोज़ उनकी कंपनी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि कोई वैकेंसी है या नहीं, और आई एम श्योर हर बार वैकेंसीज़ नहीं होती। सो अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं जो आपको लगता है कि येस यू आई वुड लाइक टू वर्क विद दिस कंपनी एंड उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, देन यू कैन एक्चुअली राइट एन अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव Bewerbung, where you show your interest that yes you are interested in working with this company. If there are any opportunities, then please let me know. So that means once the company has your information, they might uh, mm, they might consider it. If they need somebody in future, they have your data already. या फिर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं जर्मनी में, जिसने अभी तक कोई जॉब नहीं करी एंड वेर एवर यू आर ट्राइंग, आपको वहाँ से रिजेक्शंस आ रहे हैं, सो वन पॉसिबिलिटी वुड बी टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप, बिकॉज जर्मनी में इंटर्नशिप्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो देर आर चांसेस कि वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा एंड देन यू माइट गेट अनदर जॉब इन द फ्यूचर. So I'm going to come to the next question, which is about the qualification and skill set. So we all know that when we are graduated, we are post-graduated. So this is the qualification that we need to apply for a particular job. But this is not enough. In these competitive times, if you have just your qualifications and you have no extra skills, that would be a problem. सो आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें जो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, अगर आप अपने आप को टाइम से अपस्किल नहीं करेंगे, सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज यू वोंट हैव एन एज ओवर द अदर्स. Now talking about skills, I cannot forget one important point, that is language skills. So we all know that there are people who always say there are a lot of English speaking jobs in Germany. So a lot of people try to apply for these jobs. But are these jobs really English speaking? So one of the panelists answered this question. They said, no matter how international Germany becomes, Germany can never be that international, because even if you have an English speaking job, there are times when you will be required to understand German, because there is a meeting where a lot of persons or a lot of people who are in this meeting are Germans. तो अगर उन Germans के बीच में अगर आप खाली एक बंदे हो जिसको English आती है और German नहीं आती, तो you might have to adjust and you might have to make an effort to understand. So कितनी भी मार्केट इंटरनेशनल हो जाए जर्मनी की, वो एक्चुअली इतनी इंटरनेशनल होगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर को दिखाएंगे कि आपको थोड़ी जर्मन आती है, तो आपको हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी उससे जिसको बिल्कुल जर्मन नहीं आती. तो अगर आप रियली सीरियस हैं आने के लिए जर्मनी, या आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन ओनली ऑन इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स. Start learning German, have basic German skills, so that you can tell your employer that you are ready to learn the language and that you are not here focusing only on English speaking jobs. So German language skills बहुत सारी jobs में नहीं चाहिए होते जो English speaking jobs हैं, लेकिन then the question arises, should you apply in German? Should your resume be in German or be in English? So अगर किसी भी job का job description German में है, so please make sure that you apply in German. या अगर आपने ऑलरेडी अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है कि आपको A2 या B1 जर्मन आती है, इतना लेवल आप जानते हैं, सो देन ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई इन जर्मन. बट इफ़ यू आर समबडी हु डजंट नो जर्मन एट ऑल and then you apply in German, so that might give false impression to the employer that you know some German. So please make sure कि you are going through the job profile, and अगर आपको लगता है इसमें German skills required है या नहीं है, या आपको पता नहीं है, तो please ask the employer first and then apply, because if you're applying to the wrong type of jobs, maybe you're wasting your time. अगर स्किल्स की बात की जाए तो आई एम श्योर टेक्निकल स्किल्स तो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप सॉफ्ट स्किल्स को भी इक्वली वैल्यू देंगे अपने रेज्यूमे में, और वो चीज़ आप शो करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी में रहते हैं, अगर आप ये शो करना चाहेंगे कि येस आई इंटीग्रेट वेल इन द जर्मन कल्चर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ फराइन यू आर अ पार्ट ऑफ, कोई पर्टिकुलर जर्मन क्लब है जिसका आप पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप फुटबॉल फराइन में किसी में पार्ट हैं, तो दैट शोज़ कि येस यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इन द सोसाइटी. सो नेटवर्किंग उससे भी होती है, बिकॉज अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, डिफरेंट लोगों से नेटवर्क करेंगे, तो इसके थ्रू भी आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं. सो जर्मनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो एक तो है कि आपको टेलीफोनिक राउंड हो. तो अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो. सो टेलीफोनिक राउंड के लिए अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं तो दे विल बी अनदर राउंड विच कैन बी लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू, और लेट्स से इफ़ यू आर इन अनदर कंट्री, सो अ जूम कॉल और अ गूगल मीट कॉल. तो दैट वुड बी योर नेक्स्ट चांस टू कन्विंस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जर्मनी में बहुत बार ऐसा होता है, एक स्नूपर टैग होता है जिसमें वन डे दे विल इन्वाइट यू टू द
कंपनी एंड उसमें वो आपको दिखाएंगे कि येस दीज आर द पीपल यू विल बी वर्किंग विद, दिस इज़ द वर्क एनवायरनमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाँ बोलना है, हो सकता है आपको भी कंपनी के बारे में कुछ अच्छा ना लगे, तो दिस इज़ योर चांस ऑल्सो टू जज अ कंपनी, आर यू गोइंग टू वर्क फॉर द राइट कंपनी और नॉट। सो इट शुड बी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, what is the best way to crack your interview? I will talk about my personal experience. So last year when I went for an interview in a company, so that was like my dream place. I really wanted to get through it, and I was asked a lot of questions. So there was one question, one after another, and every time I tried to answer each question with the help of an example. For example, I am a teacher, so I was asked questions like, I was given different situations, what would I do in a situation. Then I talked about different experiences from my past companies, how did I handle that situation. So interview में जो story telling की art है वो बहुत ज़्यादा matter करती है, because the interviewer वो आपको सुबह से वो बहुत लोगों से same बातें सुन रहा है, the person might get bored. So you have to be original, authentic, and you have to be yourself. If you talk about your soft skills, and अगर आप वहाँ पे examples नहीं दे रहे कि what exactly happened in the last company. So what were exactly the situations when you proved yourself that yes, you are this kind of person. I personally think I got through that interview only because I had so many examples, and now I want to talk about something which I think a lot of people don't know. So अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो टैबू टॉपिक्स है जो इंटरव्यूअर आपको नहीं पूछ सकता. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रिलीजन, to your marriage, to your pregnancy. So the employer is not allowed to ask these questions. So make sure अगर आपसे कोई ऐसा question पूछता है, so you know Germans are direct, you can directly say no, I'm not comfortable answering this question. So that was all about finding a job in Germany. So मैंने जो उस workshop से जितने भी knowledge ली, जितने भी insights थे, I tried to share all that with all of you, and I hope this video helps. And if you think this video was helpful, you got a chance to learn something new, please don't forget to subscribe, just_German things. And I also have an Instagram channel, you can follow me there as well, and I will be making a lot of videos on these topics. Please make sure you follow. That's all for today. Auf Wiedersehen und Namaste.